We don't know what to do. There's so much of anxiety and so many things going on in everyone's mind. It's about our health, it's about our future, it's about our jobs, and everything is having an adverse effect. And we know we've all of us have been hearing that people who have heart diseases, who have hypertension, who have diabetes, who have chronic illnesses, they are more susceptible. They are more susceptible to complications. So a person who already has a problem is put into more of anxiety, more of problem, and more of the heart race is going on, not knowing what to do. So here ASSOCHAM has organized this webinar in which we would be addressing most of the questions which have been coming up to us. We have more than 1,000 attendees, so we are very glad to have among us the wonderful panelists. I would like to start with a Sanskrit shloka. Arogyam Paramam Bhagyam Swasthyam Sarvartha Sadhanam. Now this means Nirogi Hona Param Bhagya hai. We are very lucky when we are free of disease. And this is what we all yearn to do. This is what all we want to do. We want to be free of all diseases, not only COVID-19 and Corona. So स्वास्थ्य से सभी कार्य सिद्ध होते हैं. Until unless you are healthy, you cannot achieve anything like it. So let's try to be healthy. I would like to, even though all our panelists are very well known, they're very famous, but I would still like to introduce Dr. Ashok Seth. He's the chairman, Fortis Escort Heart Institute, chairman, Cardiology Council. Welcome, sir. Fortis Group of Hospitals. He's adjunct professor of cardiology of JN Medical College, Aligarh Muslim University, and National Board of Examinations. He is the president, Asia Pacific Society of Interventional Cardiology. He is the founder director of Interventional Cardiology Foundation of India. He is the founder director of Heart Valve Foundation of India, founder director of Advanced Cardiovascular Interventions. There's a long list of his achievements, his publications, and the positions that he holds and he is holding. But there's something special which I would like to add on to. He's been honored with the national honor of Padma Shri in 2003, Padma Bhushan in 2015, and BC Roy National Award for the most eminent medical person in 2017 by the President of India. National Award of Republic of Spain, Officers Cross Order of Isabel the Catholic in 2009, Lifetime Achievement in Intervention Cardiology Award by Cheyenne Foundation Singapore in 2017, the Golden Pioneer of Intervention Cardiology by Asian Pacific Society of Intervention Cardiology in 2011, Mason Soames Award from SCAI USA in 2010, and Masters Interventionist by SCAI USA in 2017, and 85 other national and international awards. This is a very long list. We are very well aware of all his achievements. Welcome again, Dr. Ashok Seth. We are privileged to have you with us. Next, I would like to introduce Dr. K.K. Agrawal. He's a star. He is very well known to us. Each of us have listened to his talks, his lectures. Many of us would have undergone his training of CPR. So we are really honored to have you with us. A small introduction. Past National President and past Honorary Secretary General Indian Medical Association, recipient of 4 national awards, Padma Shri, Vishwa Hindi Samman, Dr. B.C. Roy National Award, and National Science Communication Award, and 1 state Delhi Hindi Sahitya Sammelan, Sahitya Shri Award 2007, Doctor and Philosopher of Indian Culture. And a very important thing, Limca Book of Records holder in CPR 10. He has done very valuable efforts in teaching, in saving lives of millions and millions of individuals through his efforts in teaching the CPR to the common people. Welcome, sir. आपका बहुत-बहुत स्वागत है. We'd like to add welcome Dr. Mohsin Wali, Padma Shri Dr. Mohsin Wali. He's an eminent Indian cardiologist and a former honorary physician to 3 presidents of India, Shri R. Venkataraman, Shri Shankar Dayal Sharma, and Shri Pranab Mukherjee. His first assignment as a physician to the President of India was with Shri R. Venkataraman at the age of 33, making him the youngest physician to serve an Indian president. He is the only physician to have served 3 presidents of India. आपका बहुत-बहुत स्वागत है, Dr. Mohsin Wali. Welcome to the panel discussion. Welcome all of you, sir.
So to carry forward the baton, I would invite Mr. Sandeep Jainji. He is the Joint Director and Head of CSR of ASSOCHAM. Sandeep ji, please welcome our guests, panelists, and our participants. Thank you, Dr. KCG, to introduce each panelist. So, very good morning, dear eminent speakers and learned audience. On behalf of ASSOCHAM, it is my proud privilege to extend a very warm welcome to the world-renowned panelists, ASSOCHAM members, and participants who have taken out their precious time to participate in this very timely and important webinar. This is a proud moment for every one of us to be part of this webinar where 3 Padma awardees, prominent personalities, and medical experts are with us. So today we are here to discuss on a comprehensive preventive and promotive measures very significantly related to heart wellness. So cardiovascular diseases are the biggest cause of mortality and disability in the world. Therefore, protecting our heart is more important than ever during COVID-19. As we know that people with heart diseases, including those with high blood pressure, are at a higher risk of complications due to their low immune system. In this scenario and situation, it is imperative to undergo regular checkup by our doctors to maintain our heart conditions and reduce the risk. Furthermore, delay in care for any reasons, including fear of COVID-19, can lead to long-term health consequences. Although people of any age group may be infected, however, elderly persons especially, or people with pre-existing medical histories such as cardiovascular disease or asthmatic or diabetic are more vulnerable to COVID-19. In this context, several leading organizations of national and international level are working together to reduce the risk, especially for people with heart ailments during the COVID-19 pandemic. Prevention is better than cure. In the light of this bold but very important statement, it is highly significant to understand that we need not to be panic, however, to be very cautious to take all feasible and necessary steps as precautionary measures. I will not take much more time as our participants are eager to listen our expert panelists and their advices to stay healthy. So with these words, I request our session moderator, Dr. Rajesh Keshri, to take this session further and continue with our experts. Jai Hind. Dr. Rajesh Keshri. Jai Hind. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sandeep ji. So I would start with the first question, which I think is a very important question to clarify. We've all been hearing that people with chronic disease, especially heart disease, lung diseases, and diabetes, are more prone to complications of COVID-19, corona. So, but heart disease is a very wide topic. It's not just one disease. It's not even just like diabetes or cold cough. It's a very wide topic. So my question to Dr. Ashok said, so would you enlighten us about what are the particular heart disease patients with which should be more cautious or are more prone to suffer with complications? Because heart disease is not just one disease. It can be hypertension, it can be coronary artery disease, it can be heart failure, it can be cardiomegaly, valvulopathy, and there are so many things. So what is your opinion, sir? So there are 2 aspects to your question, and I think we should clarify both. First is, are the heart patients more likely to have COVID disease? And secondly, are they more likely to have severe COVID disease, and which heart patients? So on the first question, are they more likely? I think, we got to understand that that question is very difficult to answer because, like you said, heart disease constitutes elderly, they have diabetes, they have other comorbidities. And therefore, our societies and ourselves are clear that every patient has to take the same amount of precautions, whether he's a heart patient or not a heart patient, to prevent himself from developing COVID. So all those precautions are mandatory for every individual because perhaps the risk factor of developing heart disease, having COVID, is the same as any general population, and therefore the precautions have to be absolutely strict, be it hand washing, be it masking, be it not going out into densely populated areas, be it maintaining social as well as physical distancing, are all very important.
And remember, many of the heart patients are above the age of 60. But what is very clear is that heart patients are going to develop more severe form of COVID disease, are going to have greater forms and severity and complications of COVID once COVID affects them. And when we talk about heart patients, yes, it includes hypertension, includes patient with heart failure, it includes patient with previous myocardial infarctions, it includes patients with congenital heart disease and cyanotic congenital heart disease. So it actually encompasses a spectrum of patients who are all at risk of developing severe COVID disease, which means that they would actually be more prone to develop pneumonias, they would be more prone to develop heart failures, infarctions, heart attacks, heart failures, shock situation, and actually many of them, and certainly more than a normal person, would succumb to COVID. So quality of life, and we've got to actually protect all our heart patients from developing COVID and be very careful during these times. Thank you so much, sir. That was, in fact, you have answered to a number of our questions which were down the line with this one statement. Thank you so much. I would like to ask Dr. K.K. Agrawal. So have you noticed during the lockdown phase and during the phase of Corona, has there been any change in the blood pressure levels? Like we've been noticing in diabetes, there's almost a 20% increase in the blood glucose level of diabetics in some studies that we've seen. Has been any change in the level of blood pressure? Has been there any change in the level of cholesterol during this period? Have they fared better or worse? Because we are seeing that some patients are actually faring better during the lockdown. What is your opinion, sir? Dr. K.K. Agrawal. Let me try to explain it in a layman's language, because many of your ASSOCHAM members may not be the doctors. So if I have to explain it, this virus outside my body cannot fly, cannot replicate, cannot run, cannot walk. So therefore, it has to be transported to my body through something. When it is transported, this virus doesn't know anything which come on its way, it will enter. So whether it is diabetic, heart patients, or VIP, or a prime minister, or a president, anybody who comes in between him on his flow and the moisture, and he will enter inside. Now, once it is entered inside, it will work like a key. It will identify a lock. That lock is called ACE2 lock. So if it finds a ACE2 lock in the nasopharynx or the pharynx, it will open the lock. Once it opens the lock, it enters inside. Opening of the lock is called as a receptor binding domain. Once it enters inside, it has to become like a family member of the body. That is called as a fusion membrane domain. And there this virus has two types of proteins, structural proteins, which are E, G, M, S, N. And then it has a non-structural protein called RDRP, ORF1A, ORF1B. So with the help of these non-binding proteins, they work like a photocopier, and they start replicating this virus in my body. Now, once this virus enters my body, it will start causing injury to those organs wherever it can enter through the ACE2 receptor. So basically, it causes inflammation of the smallest arteries and veins. So if it is in pancreas, so remember the word itis. If it enters the conjunctiva, conjunctivitis. It enters the media, otitis media, otitis, serous otitis. It enters the nose, rhinitis. It enters the pharynx, pharyngitis. It enters the bronchus, bronchitis, alveolitis, appendicitis, enteritis. So wherever it enters, it will cause inflammation of the arterial wall. And that arterial wall injury will produce a substance called IL-6, which is called interleukin-6, which is a cytokine and which is pro-inflammatory. It is also anti-inflammatory through a myokine, but it will produce, being a pro-inflammatory, it will cause inflammation.
So therefore, in those patients where we say your CRP is between 1 and 3, we say low-grade inflammation, where we come back to the concept of high sensitivity CRP. So all those cardiac patients, diabetic patients, obese patients who have underlying low-grade inflammation, जिनको हम बोलते हैं कि अगर आपका लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन है तो एलडीएल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. So every patient, these are called as metabolic syndrome. So in cardiology for the last 10 years we have been saying bring your HSCRP to less than 1. So if your CRP is between 1 and 3, this interleukin marker, wherever it finds a low grade inflammation, it will ignite the inflammation to a higher grade inflammation. The first thing will be increase in IL-6, costly measurement. IL-6 goes to the liver and produces CRP. So therefore, C-reactive protein is a marker of inflammation. So therefore, all heart patients who have no low-grade inflammation, this will behave like a normal inflammation. But those diabetics, ischemic heart disease, hypertension, obesity, asthmatics, those people have low-grade inflammation, CRP is 1 and 3. Their CRP will get exaggerated. Now, if there is a low-grade vascular inflammation will increase fibrinogen. When the fibrinogen increases, it will form a clot. And that clot will produce fibrin-degrading products called D-dimer. So therefore, the whole pathophysiology is in any condition in the body where CRP is normal, it will come and go. Mild conjunctivitis, mild appendicitis. But if your residual, if your underlying C-reactive protein is high and you are prone to inflammation, it will accelerate the inflammation. It will accelerate the inflammation in 5 places. 1, GI. So therefore, specifically, it involves the GI, small intestine, and spares the large intestine. So we don't see mucus and blood in this particular condition. It involves the heart and the lungs, but it spares the larynx. It does not cause laryngitis. It does not cause mediastinal lymphadenopathy. It will involve the eye, will cause conjunctivitis. It will involve the skin, which is called as skin involvement. And it will involve the blood, gallbladder, and liver. Therefore, it will convert the conversion of rasa into rakta. Now, unfortunately, in modern medicine, we don't have this concept. But if you combine Ayurveda, I would like, if I can. Yes. Just take 2 minutes. If you combine Ayurveda with modern medicine, all the answers comes. Ayurveda says health is some dosha, some dhatu, some agni. So therefore, there is a word in Ayurveda called some agni. So this is a disorder of agni, because that's what Ayurveda is. In modern medicine, we are still debating what is that agni in Ayurveda, number 1. Number 2, Ayurveda basically classifies pitta, which is metabolism, into 5 pitta. It says bhrajak pitta, skin. It says alochak pitta, eye. It says pachak pitta, which is small intestine. It says ranjak pitta, which is liver, gallbladder, and blood. And it talks about sadhak pitta, which is heart and cardiovascular system. So if you see from Ayurveda point of view, wherever Ayurveda says pitta is present, it is causing increase in agni and producing systems. Diseases there. Modern medicine cannot explain why it is sparing larynx, why it is sparing mediastinal, why it is sparing the joints, because this disease does not cause joint involvement at all. So those answers can only come when we combine Ayurvedic philosophy into modern medicine philosophy. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So that was a very exhaustive answer. Dr. Mohsin Wali, I would like to ask you, this is for our audience is basically common laymen who are worried about their day-to-day problems, and the day-to-day problems that our laymen and our audience understand is things like blood pressure level, cholesterol level, pulse level. And these things have been varying because of the anxiety, because our dietary patterns are changing, because we've been locked down for many months, so we've been eating at home.
the exercise is limited. So I'd like to ask you, sir, Dr. Masin Wali, what changes have you seen in the patients during the lockdown period? Have the blood pressure levels risen? Have they remained same? Are there any changes in the cholesterol levels? What is your opinion, sir? Yes, if you permit me to share the screen, I'll give you some out-of-the-box concepts about what we are talking. So, first of all, I would like to thank ASSOCHAM and your team. Your team has worked very hard to bring us together today, and I'm very grateful to ASSOCHAM for giving a concept of wellness, which is the concept required. This is the thing which is required. And my salutations to your president, Mr. Hiradandani. And under his leadership, I wish ASSOCHAM to grow. And what is happening these days that we are losing a lot of doctors. A lot of doctors we have lost. And in doing so, I would pay my tributes to loss of our guru, Professor Dr. Padmavati, and who was doyen of cardiology, and we are all her disciples, rather students. I will also pay my respects to my beloved president, Mr. Pranab Mukherjee, whom we have recently, and nation has recently lost. He was really a Bharat Ratna. And I would pay this through Ganesh Stuti, to begin my concept of expressing my gratefulness that in one of the pandals, Ganeshji was depicting as the healer. So this concept of illness to wellness, which you have brought, covers broadly all my answers. If we can solve many problems, as was just told by Dr. K.K. Agarwal, because the understanding of health and wellness depends on a teamwork. As perfectly told by Dr. Agarwal, Ayurveda says that perfect health is defined as a state of balance between mind, body, and soul. And this is what we have to practice. And we have people who have lived their life. This is May Willis, who lived her age. And we have the ambassador of health in our country, none other than the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, who is giving a big lesson to the people of India, and lesson of health along with lesson of peace. This was a recent video which people have seen, and he is walking and giving a message to the people and country that walking is best for health. I have curtailed the video because this is an interactive session, and this picture I have brought, I was there in this function inaugurated by the President of India. International Yoga Day was declared later on, 21st June, and he gave the message. And the effect of the message of yoga and exercise, you can see in this video, famous video of Olympics. It is very entertaining, but this has a big message of appreciation of India, its culture, and its theme. Charlie White and Merrill Davis, they portrayed an Indian song, and they got the first prize in the Olympics. This was the concept of our health and Ayurveda depicted in the ice field of the Toronto. And people have devised abroad also as couple yoga, in which they enjoy at family level. So these are the answers to the problem, because we are spending so much trillion of rupees per year and we are stressed. That is what is disturbing us during the lockdown. If you reverse the word stressed, it becomes sweet. And both ways, it is also important. If you take too much desserts, it causes high carbohydrate, causes stress to the system. And we all have an elephant in the kitchen in the form of sugar, and which we have to avoid to save our life from the corona. This applies on corona. And we sometimes pose as innocent buyers, and we pose like we take a Diet Coke with 2
tier burger and we go and ask, what do you have with no fat and no sugar? This is not to be done. This leads to obesity, which is the mother of all the diseases for which we are gathered together. Second enemy is this, smoking. And smoking is taking so many lives. And third is drugs. So a doctor of the future will no longer treat the human frame with the drugs, but rather will cure and prevent diseases with nutrition. Our concept of health is reactive. We go to Dr. Seth when we have a heart attack. We go to Dr. Agarwal when somebody has a stroke or lung infection. So we have to be continuous and proactive in our approach. I have many messages, but the biggest message is eat healthy. And we have a lot of research and a lot of new advances in the form of wearables, modern medicine, integrated medicine, along with at the same time, we have computers and a lot of advancements in the form of artificial intelligence. This lady recently at the University College of London has worked hard in giving us the highest international internet speed of 178 terabits, in which we can do a lot of things sitting in our house. So a lot of things are happening. So lot of things are happening. Sorry for this got hung up. So the story of COVID, it starts from Wuhan. And I'm very angry that Wuhan is celebrating while world is suffering. I'm very frankly showing this slide that they are celebrating, solemnizing weddings, while this lady has given us this virus through her lab. This person, Luc Montagnier, is a French Nobel laureate who coined the theory which has spoiled our brains that this virus has been produced. But I don't subscribe that. This is a thing which shows the mental condition of our heart during COVID. They are pushing the van and one person is so much engrossed and mentally unsound that he is pushing the van from the top. This is what Dr. Agarwal was talking, the key. It finds a lock and this is what is a spike protein, and this produces lots of effect on cardiovascular disease, for which we are gathered to discuss here. The slides are not coming. Dr. Moshe, your slides are not coming. Slides are not coming, so I will come. But there is no. Are they coming now? No. So today morning, when I was just sitting near the computer, yes, we can come back. Thank you, Dr. Agarwal, for pointing out this. Today morning, a very new concept has come from CDC, Jacobson's concept. Dr. Daniel Jacobson has found out, in addition to what we were talking as cytokine storms, as was told by Dr. Agarwal, that we also have bradykinin storm. And this was found after pooling of lots of data through the supercomputer. And he has given the theory that apart from cytokines, this virus liberates bradykinins, and they explain a lot of things. And the first call today I got from a young patient of mine who sent this message, and she had swelling of all over the body, including swelling of the hand. At 8:26, you can see this, she sent a WhatsApp message. So this virus has got, we were taught a word, protein manifestation. So it is involving everywhere where the receptors are there, as told by Dr. Agarwal, Dr. Seth. So this is a very wicked virus. We have to prevent this virus from entering our body. The lock and key has to be separated. And the best message which I have come for today is separate the lock and key by this curtain. Please wear the curtain, wear the mask, and that would solve lots of problems, as told by Prime Minister Saab recently. Thank you very much, and I will answer subsequent questions. So continuing in the same spirit,
I would come to Dr. Ashok Seth, because we've been talking about the cytokine storm. So we have seen in many patients, even young patients who are admitted for severe corona in ICUs, they have very high levels of cardiac enzymes, which are usually present during the myocardial infarction, or in layman's language, heart attack. But then they recover. And what is their future? Sir, अगर किसी को ऐसी problem हो जाए, so do they have to take precaution in the future? Does it adversely affect their health if they have and severe rise in cardiac enzymes? So a very important Dr. Ashok question. Seth, sir. Yes, you can hear me? Can you hear me well? Yes, sir. Okay, good. I think we Yes, have sir. to address this in a good perspective. Firstly, that we've already stated that, and you raised this issue about cardiac enzymes. There are multiple ways in which the virus affects the heart. And by the way, the heart can get affected at least at a substrate level with some damage to the heart in as high as 75% of the people, as seen by MRI scans. But that may not be clinical. Clinical affecting of the heart can happen directly, even in people who got very mild symptoms, can actually, because the virus has a tendency to create formation of clots within the body. It's one of the ways in which virus affects. It thickens the blood. Dr. Agarwal mentioned that it causes inflammation. It also causes inflammation within the arteries, and that leads to also formation of clots and heart attacks. The formation of clots in young people can not just present as heart attacks, but can also present as clot within the lungs, causing a condition what we call pulmonary embolism, which presents with severe breathlessness, low blood pressure, inability to, in fact, it becomes a low oxygenation in the blood, and severe breathlessness. It's a life-threatening condition. And the clotting tendency of the blood can also cause clots in the brain arteries, leading to stroke even in young people. So these are direct effects on the cardiovascular system. But there are other things which happen. Inflammation also can affect the heart muscle, leading to what we call myocarditis, which actually means that suddenly the heart muscle starts beating less strongly, the pumping efficiency goes down, ejection fraction or pumping efficiency goes low, person becomes breathless, low blood pressure, and even to a stage of shock. So that's the second presentation, and that's the virus directly affecting the heart muscle. And the third aspect, and all these are inflammatory mechanisms. It's not as if the virus is infecting, the virus causes inflammation, and that is what affects the heart. And the third way is that it also causes heart rate disturbances. The heart rate, as we know, is responsible for maintaining ourselves. Heart beats at normally at 70 to 90 per minute. These organisms causing the inflammation of the heart can make the heart beat at 150 and 160, causing to a dangerous circumstances, or can rarely even cause heart rates to go very slow, leading to patients getting dizziness, even loss of consciousness because of affecting the heart rate. So multiple ways it affects the heart. Now, the more serious the patient gets, the more the heart rate gets affected. And this effect, when you cause the muscle enzymes, when the heart gets affected, then the muscle enzymes go up, and that is what is seen as a troponin. So troponin itself gets raised in a large proportion of patients as an indicator of affection of the heart muscle, serious or non-serious, but the higher the level of troponin, the worse is the outcome of the patient, and beyond a particular level, deaths go up, much higher. So the worse the patient, the greater is the affection of the heart. Now you've come to that, and that is why we've got to be very careful, not just about heart patients who are more prone to these problems when they get COVID, but also of all COVID patients and all young COVID patients who can have all these problems. Secondly, you asked, so what happens when they get discharged if your heart has been affected by COVID? Very important question. It's not just the heart. It's an important question for all COVID patients, because now, as more and more patients recover and getting discharged from the hospital with a good recovery, we also know that there is a syndrome called long COVID syndrome.
which means that majority of the patients are going to continue to have symptoms for quite some time. So first, take example, the lung problem. Breathlessness. Firstly, COVID can actually affect the lungs, not just temporarily, but severe COVID pneumonias and inflammation, as we call it, can damage the lungs more permanently. So when a patient goes home, we suddenly start finding on CT examinations fibrosis persisting within the lungs, therefore causing breathlessness over a longer period of time. Even when there's a recovery from the lungs, then there is the tiredness, there's exhaustion, there's joint pains, there is persisting cough, खांसी होती रहती है और चलती रहती है for a long duration. Person cannot do the daily activities जो हमने जिंदगी में करना होता है कि बाथरूम जाना है, खाना खाना या खाना बनाना है या अपने को देखना है, वो सब चीजें मुश्किल हो जाती हैं, थकान होनी शुरू हो जाती है. एंड ये सब चीजें लिटरली 3-3 महीने तक चलती हैं. एक और चीज डेवलप होती है जो कि इनएडिक्वेसी. जब आप खुद ये सब काम नहीं कर सकते हो तो लगता है कि जैसे कि हम जीने का रहने का क्या फायदा, हमें तो एक ऐसी डिजीज हुई है कि अब हम जी नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते. उसके ऊपर देयर इज आल्सो अ साइकोलॉजिकल फैक्टर व्हिच कम्स इन कि दूसरे लोग आपसे दूर भागते हैं. देयर इज अ सोशल स्टिग्मा गेट्स अटैच्ड टू इट. कहते हैं कि देखिए इनको तो कोविड हो गया है, अब हमें दूर रहना चाहिए इनसे. All those misconceptions lead to a situation we call after COVID syndrome, which has to be taken care of for the patient. In fact, heart disease की जहां तक बात है, nearly on MRI scan, 70 to 80% have some indication of inflammation on the heart. And जिनको heart की problem होती है, जिनका heart weak हो जाता है, उनको तो कई महीने लग जाते हैं heart recovery के ऊपर. So जब हम इन patients को discharge करते हैं, तो हमारा ये मकसद नहीं है कि इनको अच्छा ठीक हो गए, अब आपको हम 3 महीने बाद देखेंगे, अब आप ठीक होते रहिए, आप तो बच गए. ऐसा बात नहीं. इनफैक्ट अब हमने तो ये क्लिनिक सेटअप कर ली है, जिस तरह हम लोगों को मैनेज करते हैं अस्पताल में, उसी तरह ओपीडी की स्पेसिफिक क्लिनिक सेटअप हो गई है टू लुक आफ्टर कोविड पेशेंट्स, जिनमें की साइकोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी फिजिशियन, इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, सब पल्मोनोलॉजिस्ट सब इकट्ठे बैठ के पेशेंट को एग्जामिन करके और फिजियोथेरेपी करा के पेशेंट को सही लाइफ पे लाना हमारा बहुत मकसद होता है. तो साइकोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपी along with respiratory and cardiovascular care becomes the proper way to restore a patient back to life. हमारा मकसद होता है कि पेशेंट को डिस्चार्ज किया तो बात नहीं खत्म हुई. पेशेंट जब ठीक लाइफ पे आया और फुल लाइफ लीड करना शुरू कर दिया उसने, और उसके लिए 2 से 3 महीने लग सकते हैं, तब हमारा मकसद कंप्लीट होता है. एज अ डॉक्टर देन वी से कि हमने पेशेंट को एज अ होलिस्टिक वे, साइकोलॉजिकल, सोशल, मेंटल, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल, बाय द वे दीज डेज, कि उसको इकोनॉमिकल वेलबींग में वापस लाना तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है. दैट इन अ सेंस इज. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. आपने इतने सही और सरल तरीके से सबको बताया कार्डियक डिजीज के बारे में, क्या हो सकता है, कैसे बचाव करना है और इलाज होने के बाद भी क्या करना है. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डॉक्टर के अग्रवाल. सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान सब लोग वीक थे, घर में थे. देयर इज लॉट ऑफ एंजाइटी, नॉट ओनली एंजाइटी ऑफ डिजीज बट ऑल्सो a great uncertainty in future. बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रहे हैं, बिजनेसेस इफेक्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर से बीमारी है, स्ट्रेस है, खान पान ठीक नहीं है, तो ये इस सबके अंदर है. This is causing a lot of mental stress to all of us, to all of our patients, and this is causing maybe an increase in the parameters like blood pressure, cholesterol. So what is your advice? How do you see the future? और आप क्या कहना चाहेंगे मरीजों को, कि हमारे दर्शकों को, मरीजों को नहीं, हमारे दर्शकों को, कि इस स्ट्रेस को कैसे कम करें, क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए? सर, I'll go back to महाभारत. एंड महाभारत में जब धृतराष्ट्र था, उसने एक बार विदुर को बुलाया और उसने बोला मुझे नींद नहीं आ रही. तो विदुर ने उसको जो कारण बताया, दैट इज कॉल्ड विदुर नीति, एंड दे आर एप्लीकेबल इवन टुडे.
तो उसने कहा विदुर को कि 5 कारणों से नींद नहीं आती। पहला कारण है कि तुमने कोई चोरी करी है। आज की डेट में कोविड के हिसाब से कोई आदमी बोले कि मैं किसी कोविड से मिला था और मेरे घर में आके नहीं बताया, तो मेरे कारण से मेरे माँ बाप को हो गई, या मैंने टेस्ट नहीं कराया इस कारण से किसी दूसरे को हो गई, मैंने चोरी करी है और उस कारण से गिल्ट आ गया है कि मेरे कारण से किसी को हो गया है। अगर मैंने प्रिकॉशन ले ली होती तो मेरे पिताजी को नहीं होता, उनकी मृत्यु नहीं होती, तो वो दिन भर तक उसको नींद नहीं आएगी। दैट इज वन। दूसरा उन्होंने कारण बताया है वो है पैशन, यानी कि आपके अंदर में कोई एडिक्शन है। आपके मन में एडिक्शन है कि भाड़ में गया कोरोना, मेरे को तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है, या मेरे को तो शराब पीनी है, मेरे को तो सिगरेट पीनी है। बोले उन लोगों को नींद नहीं आती जिनको जो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा। तीसरा है जिनका कुछ खो गया है, यानी कि जिनका पैसे का नुकसान हो गया है, मेरी नौकरी चली गई है, उनको नींद नहीं आ रही। पांचवा है जिनकी गिल्ट का मतलब होता है जो अभी अशोक जी ने बोला है स्टिग्मा, कि लोग मेरे को स्टिग्मा करके चला रहे हैं इसलिए मेरे को नींद नहीं आ रही। पांचवा है डर कि वायरस मेरे को मार डालेगा, मेरे माता को डालेगा, मेरे पिताजी को मार डालेगा। तो इन 5 चीजों को अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को जाना पड़ेगा महाभारत में, रामायण में जाना पड़ेगा, महाभारत से रामायण में। रामायण में 5 प्रकार के मन बताए। सुमंत के बाद में मंथरा, मंथरा के बाद में लक्ष्मण, हनुमान एंड मंदोदरी। 5 ऐसे। सबसे पहला सुमंत, राइट एजुकेशन। सुमंत राइट एजुकेशन थ्रू होम टू दशरथ। दूसरा है मंथरा, दैट इज मिथ्स, जो कि आपको गलत एजुकेशन दे रहे हैं। ये दोनों अब आज की डेट में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, कुछ सुमंत का काम कर रही है, कुछ मंथरा का काम कर रही है। जो मंथरा वाला मैसेज आ गया आपको नींद नहीं आएगी कि भाई आज तो ये हो गया, आपको नींद नहीं आएगी। यू विल बिकम काम, हाँ अच्छा हो गया, आज तो नई रिसर्च आ गई है। तो दैट इज कॉल्ड सुमंत एंड मंथरा। जब भी आपका मन डाइवर्ट हो तो फिर आपने अपनी मंदोदरी को कंट्रोल करना है। कि रावण को समझाया, रावण मीन्स अहंकार। जब भी आपका मन करे अरे छोड़ो यार कुछ नहीं होता, बहुत हो गया, चलो बाहर चलते हैं, पार्टी करते हैं, दैट इज ईगो। तब अपनी मंथरा को भेजो, उसे समझाए नहीं बेटा अभी नहीं, प्रिकॉशन लेनी जरूरी है। और फिर जब भी आपके मन में डाउट हो तो आस्क योर कॉन्शियसनेस कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। आइदर थ्रू लक्ष्मण, दैट मीन्स डायरेक्ट योर क्वेश्चंस टू योर कॉन्शियसनेस, or through Hanuman, that means take a deep breathing, do a pranayam, that will direct you towards your Lakshman to direct it to your Ram. So therefore आज की डेट में अगर आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, you have to identify the right messages and the wrong messages. We at Heart Care Foundation of India tomorrow are launching a health patrol. Health patrol के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, every myth we will try to find an evidence. Every COVID message in the WhatsApp, we will pick it up, find out the truth and circulate it. So unless you do that, आदमी के मन में इस वक्त में wrong messages fear कर सकते हैं। डॉक्टर सेठ, डॉक्टर मोहसिन वली will realize, जब हम 3rd ईयर में थे, इसको हम 3rd ईयर सिंड्रोम बोलते थे। 3rd ईयर सिंड्रोम का मतलब है कि MBBS में 3rd ईयर में जो भी आपने पेशेंट देखा, शाम को हम उसी को इमेजिन करते थे कि हमारे को वही हो गया। तो वट एवर यू रीड इन ए व्हाट्सएप, यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग पक्का मेरे को ये हो गया। अगर आपको एक स्टडी आ गई अभी कि कोविड से कैंसर हो सकता है, तो शाम तक यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग मेरे को तो पक्का ही होगा। दैट्स व्हाट द पावर ऑफ मंत्रा इज। सो पावर ऑफ मंत्रा, एक अकेली मंत्रा ने पूरी रामायण क्रिएट करा दी थी। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एक मंत्रा वाला मैसेज मेरी कितनी एंजाइटी कर सकता है। So therefore you have to understand that you have to find out, everybody has to have a Sumant in his career to guide you correctly. So whenever you read a mantra, go back to your Sumant, go back to your local family doctor, भाई मैंने ये WhatsApp देखा है, मुझे बताओ सही है कि नहीं है। That's what, and there is no other way to control your mind. Thank you so much, sir. Thank you so much. Dr. Mohsin Wali, आपके पास आएंगे and there's a question that how many people are not going to doctors actually. बहुत लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, और भी साथ में प्रॉब्लम्स हैं,
वो डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर रहे हैं, बिकॉज पीपल आर अफ्रेड दैट इफ दे गो टू द डॉक्टर दे माइट कैच एन इन्फेक्शन, दे माइट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स देयर. And we have been seeing in our practice that even patients who are seriously sick, they defer their admission or visiting a doctor, and that at times is causing a lot of serious sickness, ICU admissions, and even mortality. What do you feel, sir? जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको कब जाना चाहिए, किस कंडीशन में अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रिव्यू कराना चाहिए? What would you advise to patients? We because lot of patients have. Yes sir. Yes. पहले तो डॉक्टर ही डर रहे हैं पेशेंट्स देखने में. आपने सही, तो डरेंगे ही पेशेंट्स को. तो ये खतरा है ना कि कोविड लग जाएगा, ठीक डर रहे हैं. लेकिन वो डॉक्टर्स जो हैं वो पहले अवेलेबल हों और हम लोग आगे आए और हम लोग ब्रेवली इसका मुकाबला करें, अपने को पहले प्रोटेक्ट करें. वी हैव लॉस्ट मोर देन अबाउट 450 डॉक्टर्स and every day some doctor is losing his life. And nobody is bothering about this loss. I'm very deeply concerned about this. The government sector should wake up to compensate the doctor's loss. This is very important message through your chamber. Number two, patients should not get scared. You know, बार बार हम लोग ये कह रहे हैं कि वायरस जो है 90% लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करता है, तो उसमें 100% लोगों को डरने की क्या जरूरत है? डॉक्टर अग्रवाल ने, डॉक्टर सेठ ने, सबने शुरू से बताया है कि बहुत कम 4 या 5% लोग हैं जिनको आईसीयू की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है. तो बाकी 90 से 95% जो लोग हैं लार्जली, उनको ये सब जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन इस वायरस में जो सबसे गंदी बात है, सबसे खराब बात है, वो ये है कि कब क्या हो जाएगा इसका हमें पता नहीं लगेगा. तो मैं एक छोटा सा ये अपना कई बार ये दिखाया भी गया है, ये रखें. अभी जो मैंने आपको ब्रेडिकाइनिन वाली बात बताई थी, और हार्ट बीट का जो इफेक्ट, हार्ट बीट पर जो इफेक्ट होता है वो या तो बहुत तेज होता है हार्ट की रफ्तार, जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं, और या वो स्लो भी हो रहा है. मैंने दोनों तरह के पेशेंट देखे हैं. तो दोनों तरह के पेशेंट्स को देखने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि हार्ट के मरीजों में दोनों काम कर सकता है वायरस. ब्रेडिकार्डिया भी कर सकता है और टैकीकार्डिया भी कर सकता है. तो अगर आपकी जो हार्ट रेट यूजुअल, जैसे मेरी 76-74 के बीच में रहती है आमतौर पे, उससे एकदम से बढ़नी शुरू हो जाए, 90, 95, 100 होने लगे, कुछ नहीं होगा, बुखार भी नहीं आएगा उस वक्त. या आपकी हार्ट रेट 45 हो जाए, 46 हो जाए, तो सबसे पहला ये इंडिकेशन है डॉक्टर सेठ को या डॉक्टर के अग्रवाल जैसे किसी और डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को फोन करने का कि साहब मुझे ये हो रहा है. 1. और मैं तो लोगों से ये कहता हूं, इसका पहला लक्षण ये है कि इसका कोई लक्षण नहीं होता. सिर्फ कुछ लोगों में मैंने देखा है कि थकान हो जाती है. तो उस स्टेज पे अगर हम चैतन्य हो जाएंगे, उस स्टेज पे हम अपनी खबरगिरी करेंगे, तो हम शायद इसके आगे चलने वाले खतरे से बढ़ जाएंगे. तीसरी चीज जो अब मैं देख रहा हूं, यंग पीपल आर वॉकिंग एंड दे आर हैविंग चेंजेस इन देयर चेस्ट, और वो चेस्ट के स्कैन्स में दिखाई दे रही हैं, जबकि वो हमसे आके लड़ाई करते हैं, साहब मेरा तो कोविड टेस्ट कल ही हुआ है, नेगेटिव है. तो ये धूल जैसे हमारी टेबल पे सेटल होती रहती है, इस तरह से ये वायरस सांस के जरिए, हवा के जरिए हमारे लग में जा रहा है. तो उसका बार बार हम जब बात करते हैं इन सब चीजों की, तो वो पर्दा एक बीच में आना चाहिए, जिसको हम मास्क कहते हैं. तो ये जरूरी है कि हम अवेलेबल रहें और पेशेंट्स डॉक्टर के पास जैसे ही कोई लक्षण हो तो आए. ये जरूरी नहीं है कि आपको बुखार आएगा, ये जरूरी नहीं है कि आपको खांसी आएगी, ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सीवियर निमोनिया हो जाएगा. तो ये सब चीजें होंगी, लेकिन अगर आपको अनयूजुअल स्लोइंग या हो हार्ट बीट की, या अनयूजुअल फास्ट हो हार्ट बीट, या आपका ऑक्सीजन, ये मैंने इसलिए निकाला था, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो ड्रॉप कर जाए. ये एक हैंडी टूल है जो हर एक अपने घर में रख सकता है. एवरेज 1200 से 1500 का एक पल्स ऑक्सीमीटर अच्छी क्वालिटी का आता है. तो इसमें अगर आपको ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाए, 90 के कम हो जाए, तो फौरन आपको अलार्म बजना चाहिए कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है. चेस्ट में पेन कोई लोगों को हुआ है. अभी कल ही मेरे पास एक लेडी बिहार से बाई एयर आई थी, और उसको कोई लक्षण नहीं था, ठीक हो रही थी. उसको सडनली उल्टियां शुरू हुई. मैंने उसको गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया. तो उसका जो ट्रोपोनिन थी, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर सेठ साहब ने किया था, जो हमारे हार्ट अटैक के पेशेंट में 50, 60, 100, 700 हो जाता है सीवियर हार्ट डिजीज में, उसका 8954 ट्रोपोनिन 1 उसका आया.
इमरजेंसी में, एंड शी वेंट वॉकिंग। तो कितना बड़ा उसके हार्ट के ऊपर असर हुआ है ये अनइमेजिनेबल है। और ऐसे ही लोगों के लंग्स पे हो रहा है, ब्रेन पे हो रहा है। आजकल एक और चीज हो रही है, लोगों को गुस्सा ज्यादा आने लगा है। ये भी कुछ हवा में कोविड का असर हो रहा है। मैं देख रहा हूँ पीपल आर गेटिंग शॉर्ट टेम्पर्ड बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस आल्सो, फाइनेंशियल रीजंस, गेटिंग लॉकडाउन, गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट होम एंड सो मेनी फैक्टर्स। क्योंकि कोविड जो है ना, पूरी दुनिया के माहौल को इसने मुतासिर कर दिया है और सबसे ज्यादा हमारी पॉकेट्स को मुतासिर किया है। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास वो घर में बहुत फैसिलिटी नहीं है। शुरू में तो हमने सोचा था कि साहब 1-2 हफ्ते में, 1-2 महीने में चला जाएगा, राशन वाशन ला के रख लेते हैं, उसके बाद अपना चैन से जिएंगे। ये तो जाएगा ही नहीं। अब तो WHO ने भी कह दिया है यू हैव टू लिव विद इट। और इसके बहुत खराब नतीजे और आगे कितने आने वाले हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर जैकॉब्सन की स्टडी में आया है कि और एक चीज आ गई, साइटोकिन स्टॉर्म के अलावा ब्रेडिकिनिन स्टॉर्म आ गया। तो अभी और क्या क्या हमको देखना बाकी है। इसके लिए हमको अपनी विजन को बरकरार रखना है, अपनी आंखों को खोल के रखना है। और टीका वीका आएगा, अभी आप बात करेंगे लास्ट में टीके की, मुझे पता है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये सब ऐसी चीजें हैं कि इसकी कोई ब्लू बुक नहीं है हमारे पास कि ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है। हम सब स्टूडेंट्स हैं, आप हम सब जितने यहाँ बैठे हैं कोविड से सीख रहे हैं। और कोविड महाराज हमारे गुरुजी बन चुके हैं और ये हमें सिखा रहे हैं और मार भी रहे हैं साथ में, और परेशान भी कर रहे हैं, हमको बैंकरप्ट भी कर रहे हैं, हमको और तरह से परेशान कर रहे हैं, हमारे घरों की शांति छीन रहे हैं, हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हो रही हैं। जैसे अभी डॉक्टर सेठ ने कहा, उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत जरूरी है। एक बड़ी एपिडेमिक आने वाली है कोविड के बाद या कोविड के साथ, जिसमें लोगों को मेंटल काउंसलिंग की, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत पड़ने वाली है। और इसके लिए हमको अपने काउंसलर्स को और साइकियाट्रिस्ट को तैयार करना है, बहुत बड़ा विजन रखना है, हमको बहुत कुछ करना है, हमको कोविड के साथ रहते हुए बहुत कुछ करना है। और जैसे कि हमारे पुराणों में, वेदों में है, जैन मुनि मास्क लगाते थे, और गीता का 15वां श्लोक है, उसमें शंख बजाया गया था। महाभारत में ये शंख मैं रखता हूँ अपनी टेबल पे, लोगों से कहता हूँ भैया शंख बजाओ, अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करो। तो सबसे ज्यादा जो हमें इस वक्त जरूरत है, हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने का बेहतरीन तरीका है कि हम अपने मरीजों से कहते हैं कि आप बैलून फुलाइए, शंख बजाइए, बांसुरी बजाइए। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स लाया था। मुझे बहुत खेद है कि हमारे सिस्टम को हमने भी ठीक से सीखा नहीं है। हम अपने सिस्टम्स को इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट करना अभी सीख रहे हैं। मेरा बहुत अच्छा, मैंने 8 दिन की मेहनत रात भर जाकर एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया था, किसी और मौके पे आपको दिखाऊंगा। उसमें मैंने इस बात पे जोर दिया है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दूसरी तरफ महाभारत और गीता की हमारे उपदेश है, आयुर्वेदा है। दोनों का बैलेंस करके चलना है, हमको दोनों को बैलेंस करके चलना है, अनुशासित रहना है। जैसे एक सिंपल सी चीज है हल्दी वाला दूध, ये बहुत फायदे की चीज है। हल्दी को पेटेंट करा लिया किसी और देश ने, हम देखते रह गए। तो ये चीजें हमारी जो चरक संहिता में और हमारे जो पुरानी किताबें हैं आयुर्वेद की, उसमें हैं। उनको लोग चुरा के ले गए, अलेक्जेंडर चुरा के ले गया, फिर उसने परोस के दूसरी थाली में रख दी मेडिसिन, ग्रीक मेडिसिन आ गई। आज हम जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं वो सब टेलर्ड है। आज तरफ तो हम कार्डियक एमआरआई की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे मरीज को बेड नहीं मिल रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? गवर्नमेंट को इस वक्त बहुत ज्यादा काम किया है हमारी गवर्नमेंट ने। आपने किसी देश में नहीं देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी एक साथ जाके खड़े हों और वहां पे आह्वान करें स्वास्थ्य से जुड़े लोगों का। किसी देश में मैंने नहीं देखा कि उस देश का गृह मंत्री जाके हमारे कोविड के मरीजों को फिक्र कर रहा हो। हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने और हमारे लीडर्स जैसे डॉक्टर साहब यहाँ दोनों बैठे हैं, इन्होंने फिक्र की है कि लोग कोविड से बच जाएं। जब हम आज इस वक्त आपसे बैठ के रूबरू बात कर रहे हैं, और अभी हमें बहुत काम करना है, बहुत बचना है कोविड से, और अपने बच्चों को बचाना है। और जो इसके बारे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप की चीजें हैं, जो मिथ्स हैं, शंकाएं हैं, जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, उनको उनसे दूर रहना है। और फिर मैं वहीं लौट के आऊंगा कि हमें अपने को बचाना है थ्रू मास्क, थ्रू मास्क, थ्रू मास्क। बहुत जरूरी है ये मैसेज आपके इस वेबिनार से। अगर एक मैसेज चला गया कि हमको मास्क पाबंदी से पहनना है, तो मैं समझूंगा आज का हमारा वेबिनार सफल हो गया। बहुत धन्यवाद सर। जस्ट टू लाइटन अप द मूड, एक शायर ने कहा है, हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है,
शायद आ जाए कोई हमसे भी प्यासा, यही सोचकर थोड़ी सी बचा रखी है। सो बचे हुए तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, मैं आपसे अनुरोध है, आई विल रिक्वेस्ट कि ऑल ऑफ द पैनलिस्ट आप कुछ शब्द इसके बारे में, इस चीज के बारे में जानकारी हासिल करने की, पाने की हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ज्यादा इच्छा है। दो चीजें जो सबको बॉदर करती हैं, जिसके बारे में सब आपसे सुनना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, वो बहुत सिंपल हैं। वो ये हैं कि वो क्या खाएं और कैसे जीवन व्यतीत करें, what lifestyle changes or exercise would you advise and what diet would you advise, and I would request you to give some specific advice, कि आप ये खाइए, ये अवॉइड करिए, like whatever you feel, नमक के बारे में, जिंक के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, but something specific for our listeners, for them to take away. Dr. Ashok said, sir. So, पहले तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूंगा कि प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस, आई थिंक वो सबको ही कहेंगे, और ये कंप्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। हम देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं कि केसेस कम हुए और अब बढ़ गए, एंड ऑल दिस इज मैटर ऑफ लाइफस्टाइल। मैं ये समझाना चाहता हूँ, दैट इज वाई आपने क्या स्पेसिफिक पूछा, और ये स्पेसिफिक एम्फसाइज शुरू में ही करना बहुत इंपॉर्टेंट है, that we are actually seeing a second rise, and second rise is bound to happen because we gradually have to unlock the country, and we're doing it strategically, wo bhi theek hai. But where does the problem come in? The problem is coming in because the discipline is also lacking in addition. So we actually cannot just reverse, say ki government hi hamare liye sab kuch kare and our life will carry on, and we want to unlock ourselves, and therefore we have fed up, and that we have now got fed up of all this, और हम कब तक ये चलाते रहेंगे, और इसीलिए हम अब घूमे फिरे without mask, having a good time, let's meet friends, let's have a party in our house, ये सब, let's go to the shops, let's sit down and have meals together in the restaurant, and अब तो bars भी खुलेंगे, और let's go and have a drink and have fun, और ये सब जो चीजें हैं कि जी कुछ नहीं होगा हमें, is absolute abhorring. It is, ये सोचिए, I would actually say to your listeners कि mask and distancing is being very important, and washing your hands and keeping them clean is absolutely a must. And when we talk about mask, the proper way of wearing masks has to be emphasized. कि जी हम तो अभी अकेले बैठे हैं, इसलिए हमारे गले पे या वली साहब के गले पे मास्क है, बट बिलीव यू मी, हम इस कमरे से बाहर जाएंगे, अपने ऑफिस से बाहर जाएंगे, तो हमारा मास्क नाक के ऊपर तक चढ़ा होगा। अभी भी हमारे पास, जब मैं किसी भी सड़क पे देखता हूं तो 10% ही लोग मास्क नाक के ऊपर लगाए हुए हैं, अनदर 60-70% तो मास्क गले पे पहने हुए हैं, और देयर इज स्टिल 10% जो मास्क बगैर पहन के घूम रहे हैं। Now we want to make you understand, everybody, कि proper way of taking the mask is not just protecting yourself. आपको दूसरे को प्रोटेक्ट करना आपका फर्ज है। आप मास्क पहन के आप दूसरे की प्रोटेक्शन कर रहे हो। You have no right कि आप किसी और को नुकसान दो, क्योंकि आपको भी कोविड हो सकता है और उसको आपसे बचना है। Now एक तीसरी बात जो आप नहीं समझ रहे हो, जो लोग ऐसे लैक्सिटी कर रहे हैं, कप्लेसिटी कर रहे हैं, कि आपकी बात नहीं है, मैंने कहा दूसरों की, आपकी फैमिली की बात है। एक को कोविड होता है, पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो जाती है। आप तो शायद फिर भी बच जाओगे, आपके साथ जो आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, आपके मदर हैं, आपके फादर हैं, घर में एल्डरली हैं, हो सकता है वो कोविड से न बचे, क्योंकि आपने उनको ये कोविड पास किया है। और मैंने देखा है उन फैमिलीज को, हमने देखा है जहाँ पे पूरी फैमिलीज इफेक्ट हुई हैं, जहाँ के माता पिता न रहे, क्योंकि एक बंदे ने घर के अंदर कोविड ले आए थे, एक उनका बच्चा। सो ये सब प्रिकॉशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये हुई एक तरफ की लाइफस्टाइल की बात। जो दूसरे तरफ की लाइफस्टाइल की बात मैं समझाना चाहता हूं कि हेल्दी लिविंग की बात है। हम कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, और उसके लिए कई विटामिन भी कही गई है, कई आयुर्वेदा में भी है, कई होम्योपैथी में भी है। बट सिंपल और समझने की बात यह है कि लेट अस अंडरस्टैंड कि घर का खाना
with good vegetables and fruits सबसे अच्छा खाना होता है जो हमें सब विटामिन्स और सब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लकीली बाहर का खाना वैसे भी बंद हो गया, बट बाहर का खाना वैसे ही अनहेल्दी माना जाता है। हम कहते हैं कि विटामिन ए खाना चाहिए, डी खाना चाहिए, सी खाना चाहिए, ई खाना चाहिए, जिंक खाना चाहिए, सेलेनियम खाना चाहिए और इसकी मात्राएं बढ़ानी चाहिए। बट अगर हम अच्छा रेगुलर घर का खाना जिसमें कि सब्जी और फ्रूट्स मिले हों तो हमें ज्यादातर न्यूट्रिशन आ जाते हैं। एंड यस, देयर आर आयुर्वेदिक ड्रग्स व्हिच आई डू बिलीव, वो सब बड़ी ट्रेडिशनल होती हैं, बड़े दिनों से हमें बताई गई हैं, देयर इज सम साइंस बिहाइंड इट, और ये सब इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। बट कितना एग्जैक्ट डायरेक्ट हेल्प करती है वो कोई कह नहीं सकता, बट उनमें कोई नुकसान नहीं है। ये सब तो आफ्टर ऑल बॉडी के फायदे के लिए। बट एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग अप इम्यूनिटी। और एक्सरसाइज जब हम कहते हैं, अब तो लकीली अनलॉक हो गया है और हम ओपन एयर में जाके उन एरियाज में जहां पे बहुत कंजेशन ना हो, डेफिनेटली मास्क पहन के वॉकिंग कर सकते। मैं नहीं कहूंगा कि मास्क उतारे, बिकॉज दूसरे भी लोग हैं, और ये भी देखा गया है कि जब हम वॉक करते हैं तो द स्प्रेड ऑफ वायरस कैन बी फॉर मच लॉन्गर डिस्टेंस देन ये 6 फीट जो कहा जा रहा है। बाय द वे, मैं उसको बताना चाहता हूं कि 6 फीट इज द मिनिमम डिस्टेंस। इट इज नॉट सेड that it actually you just keep 6 feet. It is an arbitrary distance based on studies which were done on non-natural circumstances. कमरे के अंदर, बट आप जब चाहते हो, हवा चल रही है या कोई आपके सामने चल रहा है या आप स्पीड पे चल रहे हो, तो वो 6 फीट नहीं, वही डिस्टेंस 15 फीट का होगा, जिसमें कि आपको वायरस तब कहीं जाके नहीं पहुंचेगा। और अगर हवा आपकी तरफ है तो वो डिस्टेंस इवन 20 या 25 फीट पे आप इफेक्ट हो सकते हो। अगर क्लोज सराउंडिंग्स, आप एक कमरे में बैठे हो और वो एयर फ्लो सही नहीं है, तो आप मच लॉन्गर डिस्टेंस पे इफेक्ट हो सकते हो। तो ये सब समझने की बात है कि आपको किस तरह अपने आप बचना है और किस तरह अपने आप को स्ट्रेंथन पड़ता है। एक्सरसाइज की बात रही, यस, आप बाहर जाके एक्सरसाइज कर सकते हो, खुले में एक्सरसाइज कर सकते हो। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ 5 days a week इज मोर देन सफिशिएंट। आप घरों में कर सकते हो, आजकल तो इतने एप्स आ गए हैं, इवन योगा आता है। योगा इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ वेल बीइंग एंड मेंटेनेंस। योगा कीजिए, यही टाइम है सीखने का, यही टाइम है करने का, और वो घर पे बैठ के आप कर सकते हो। उससे कई ज्यादा आपकी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग बढ़ता है। तो एक्सरसाइज की बात हुई, और वो 15 मिनट आप ट्वाइस अ डे कर सकते हो इंस्टेड ऑफ 30 मिनट्स वंस अ डे। और घर में कई एक्सरसाइजेस तो घर में पॉसिबल हैं। आप घर में एक जगह पे खड़े होकर जॉगिंग कर सकते हो। कई एक्सरसाइज आपको आती हैं जो आपको सिखाती हैं उस टाइम पे, उस एप्स के साथ, उन टीवी के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और जहां तक खाने का तो मैंने बता दिया, गुड हेल्दी ईटिंग। मैं स्पेसिफिक इस हिसाब से नहीं होना चाहता, अगर कोई स्पेसिफिक पूछेगा तो आई नो कि डॉक्टर अग्रवाल भी बताएंगे, आगे डॉक्टर वली साहब भी बताएंगे। मेंटल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खुश रहना है, आपको कम्युनिकेट करना है। ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो अभी भी हो रही है हमारी, एक्चुअली सोशल इंटरेक्शन हो रहा है हमारा। आप फैमिली के साथ सोशली इंटरेक्ट कीजिए। आप जूम पे पूरी फैमिली, क्या अब तो जूम के जरिए सबको इतने हो गए हैं आपके, तो आप अंकल, आंट्स, चाचे, भतीजे सबके साथ एक ही बार में वार्तालाप कर सकते हो। आप रोज उनको देख सकते हो। इनफैक्ट मैंने अभी फादर को अपने हर रिलेटिव के साथ 1-1.5 घंटा जूम पे बिठा के, ही इज 97 years old, और मैंने ऑब्वियसली उनका इस तरह से ख्याल रखा हुआ है कि उनको बाहर सिर्फ अपनी सिस्टर के पास ले जाता हूं या वो आती हैं उनसे मिलने, बट एक्चुअली वंस अ मंथ मैं उनके हर रिलेटिव से पूरा जूम पे 1.5-2 घंटे की बात कराता हूं, जिससे कि हर रिलेटिव से एक बार करके, क्योंकि वो खुश रहते हैं उससे। तो ये एक सोशल इंटरेक्शन की बात है, मेंटल वेलबींग की बात है, डिप्रेशन होने की बात नहीं है। एंड फाइनली जो हमारे पेशेंट्स की बात आई, मैं पेशेंट्स को ये समझाना चाहता हूं कि देखिए, अपने सिम्टम्स को नहीं इग्नोर कीजिए। ये डरने की बात नहीं है, ये प्रिकॉशंस की बात है। ये वायरस हमारे साथ रहेगा, हमने इस वायरस के साथ किस तरह डील करना है, वो कॉन्फिडेंस के साथ, कंप्लेसेंस के साथ नहीं, फियर के साथ नहीं, प्रिकॉशंस के साथ। और अगर हमने कोई, हमारी बीमारी बढ़ती जा रही है, या हमारा हार्ट पेन बढ़ता जा रहा है, या हमारी कोई तकलीफ है जो बढ़ती जा रही है, तो ये उसको इग्नोर नहीं करना है। डॉक्टर्स के साथ आजकल इसी तरीके से टेली कम्युनिकेशन और टेली कंसल्टेशन तो एक कॉमन चीज हो गई है। अपने डॉक्टर को अप्रोच करें, बात करें,
अगर वो इतनी सीरियस है कि अस्पताल जाना पड़े, तो अर्जेंट केसेस के लिए तो हर अस्पताल खुला है, हर अस्पताल अपने पेशेंट्स का पूरा ख्याल रख रहा है, हर अस्पताल पूरी प्रिकॉशन ले रहा है, और पेशेंट्स को अस्पताल से इन्फेक्शन नहीं होता। डॉक्टर्स को उससे ज्यादा फिक्र रहती है, बट पेशेंट्स को अस्पताल से इन्फेक्शन नहीं होता है। पेशेंट्स को बाहर से इन्फेक्शन होता है, अपने रिलेटिव से इन्फेक्शन होता है, मल्टीपल रिलेटिव्स अस्पताल में ना आए, बट पेशेंट इज सेफ इन द हॉस्पिटल। तो ये सोच के चलना है कि जो ट्रीटमेंट एसेंशियल है उसको नहीं इग्नोर करना ही चाहिए। अ ट्रीटमेंट इन टाइम सेव्स लाइफ्स, और ये मकसद से चलना है। नॉन अर्जेंट चीजें डेफिनेटली पोस्टपोन हो सकती हैं, बट अर्जेंट चीजें को तो पोस्टपोन करके आप अपने ऊपर रिस्क ही ला सकते हैं। यू कैन एक्चुअली डू हार्म टू योरसेल्फ, सो एक्चुअली मेक श्योर that you live properly, take your drugs properly, take care of others properly, and take care of yourself properly. Thank you so much, sir. Thank you so much. That was very interesting and very informative. Thank you so much. Over to Dr. K.K. Agrawal sir. Sir, बताइए आपके क्या views हैं? Some specific advice to our listeners. Something specific. I'll go to Ashok has talked about a general aspect, and now I will go back to some specific answers. First of all, हमारे खाने में 6 टेस्ट होते हैं: स्वीट, सार, सॉल्ट, एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट एंड बिटर। कोई भी खाना होगा 6 प्रकार का होगा। नंबर 1, पंजेंट, सार एंड सॉल्ट। ये वो खाने हैं जो आप जिसका नाश्ता, लंच और डिनर नहीं कर सकते। वो सारे खाने जो आप डिनर, लंच और डिनर या नाश्ता नहीं कर सकते। यू कांट से आज अशोक सेठ जी के घर में गए, बोले आज डिनर में क्या खिलाओगे, बोले सिर्फ हरी मिर्च खिलाऊंगा। नहीं पॉसिबल है कि आज हम सिर्फ लाल मिर्च का डिनर करेंगे, आज हम सिर्फ काली मिर्च का डिनर करेंगे, आज ब्रेकफास्ट में सिर्फ नमक खाएंगे। सो पंजेंट, सार एंड सॉल्ट cannot be used as in excess quantity. Anything which is pungent, sour and salt increases digestive power, but in excess amount may be harmful. So these are inflammatory compounds. This is an inflammatory disease. So limit pungent, sour and salt. That's fine. Increase bitter, sweet and astringent. Bitter is hari sabziyan, astringent is dalein, and bitter is kadwa, which is hari sabziyan. Sweet is अपना गेहूं, चावल, रोटी. That's one principle. Second principle is क्योंकि ये वायरस मेरे शरीर में गीला वायरस है, so anything which produces dryness in my body will kill the virus. इसलिए आयुर्वेद वाले आए, गिलोय लो, अश्वगंधा लो, because they are astringent. Astringent का मतलब होता है कसैला। जो भी आयुर्वेद की चीजें आई हैं वो सारी कसैली हैं, कि जितनी भी कसैली चीजें जाओगे they will cause slight dryness in your body, एंड वो वायरस को मार डालेंगे। शुरू में रेप्लिकेशन नहीं होने देंगे उसके साथ में। फिर वो लोग आए च्यवनप्राश और आंवला के अंदर में, slightly sweet in character. That's what the principle comes in from आयुर्वेद point of view. दूसरा आता है कि ये वायरस मेरे शरीर में 50% लोगों को GI इन्फेक्शन करता है। जिन लोगों को निमोनिया नहीं हुआ उन लोगों के भी स्टूल के अंदर में ये वायरस पाया जाता है। इसका मतलब है कि ये वायरस मेरे शरीर में इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, ज्यूजिनम, इलियम, इन सब के अंदर में एब्जॉर्प्शन इंपेयर करता है। सो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करेगा, मुझे चाहिए। ये फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी करेगा, कैल्शियम, आयरन की डेफिशिएंसी करेगा, प्रोटीन लूज करेगा मेरी बॉडी से। तो इसके अंदर से ये विटामिन D मेरे को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, क्योंकि ये सारे छोटी आंत में एब्जॉर्ब होते हैं। तो इन सब के लिए मेरे को या तो सप्लीमेंट लगेगा, या मेरे को धूप लगेगी कि धूप में बैठ के विटामिन D एक्स्ट्रा लूं, ताकि वो मेरे शरीर के अंदर में वायरस को भी मारे। मेरे कपड़ों के ऊपर में वायरस लगा हुआ है तो, या मैं स्प्राउटेड खाना खाऊं जो मेरे को जिंक दे, कैल्शियम दे, विटामिन B12 दे, फॉलिक एसिड दे। तो खाने के अंदर में अगर मैं स्प्राउटेड लेता हूं तो मेरे को सप्लीमेंट की जरूरत कम पड़ेगी, और अगर मैं स्प्राउटेड नहीं लेता हूं तो मेरे को सप्लीमेंट की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। नेक्स्ट चीज ये मेरी बॉडी के अंदर में कर रहा है, वो कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है IL-6 को, इंटरल्यूकिन 6 को पैदा कर रहा है, जिसके कारण से पैदा हो रहा है टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, जिसको एंटी टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर इज कॉल्ड एज TNF ब्लॉकर, एंड नेचुरल TNF ब्लॉकर इज प्रेजेंट इन हल्दी। अगर ये प्रोटीन डेफिशिएंसी कर रहा है, यानी कि मैं सोया का दूध और उसमें साथ में हल्दी लेता हूं, तो मेरी प्रोटीन डेफिशिएंसी भी खत्म हो रही है, और मेरा IL-6 और मेरा CRP वो भी मेरा कम हो रहा है।
अभी वली जी ने बताया कि ब्रेडिकाइनिन के अंदर में भी ये काम कर रहा है, तो मेरे को नेचुरल ब्रेडिकाइनिन इनहिबिटर भी चाहिए, एंड दैट्स अ ग्रीन टी. सो ग्रीन टी इज ए नेचुरल ब्रेडिकाइनिन इनहिबिटर. सो अगर मैं हर चीज पे जाऊं कि ये क्या 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 कर रहा है, एंड देन मेरे शरीर में इम्यूनिटी कम हो रही है, तो थाइमोसिन कम हो रहा है, तो अब नेचुरल थाइमोसिन अल्फा करके रिप्लेसमेंट्स भी आ रहे हैं थाइमस के, बट दीज आर सप्लीमेंट्स विच आर required in my body. So if I take a combination of all 6 tastes and 7 colors in my diet, Ashok has said is अच्छी diet खाओ. I said combine all 7 colors and 6 tastes into it and balance them out with that. और खाओ कैसे? धूप में बैठ के, क्योंकि आप कमरे के अंदर में बैठोगे, 4 लोग बैठेंगे, इल वेंटिलेटेड रूम होगा, सबको हो जाएगा. तो अगर आप बाहर आंगन में बैठ के खाना खाते हो जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन हो और दिल में धूप हो, वो आपके लिए अच्छा है उसके बाद में. और खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद में 6 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग कर ले. नॉर्मली हम कहते हैं वॉकिंग करो, ऐसे खाने से पहले या खाने के बाद में 6 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग कर लें. और वॉक करने पे अगर आपका SpO2 कम हो रहा है तो आपको मालूम है कि कोविड आपका बढ़ रहा है, तो उससे इनडायरेक्टली आपका ये टेस्ट भी साथ में हो जाएगा. दूसरी चीज है, क्योंकि ये वायरस हीमोग्लोबिन भी कम कर रहा है, बिकॉज आयरन भी कम हो रहा है, इन्फेक्शन भी कर रहा है, बाकी चीजें भी कर रहा है, तो इसलिए बैलेंस खाना बेसिकली इन्वॉल्व ऑल 7 कलर्स, all 6 states in moderation and variety, and non-inflammatory diet. Remember the word inflammatory diet versus non-inflammatory diet. जो खाना हम व्रत में खाते हैं वो नॉन इन्फ्लेमेटरी है, जो दिन भर खाते हैं वो इन्फ्लेमेटरी है. चीनी, चावल, मैदा, रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड खाना, anything which is refined is inflammatory. So one line answer is go for a non-inflammatory diet and take all supplements which are lost by the virus in the GI, or haldi which is a natural TNF blocker, or green tea which is a bradykinin inhibitor. Namaskar. Just not correct. मेरी बारी आ रही. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर. Thank you so much for the wonderful insights. Dr. Mohsin Wali sir, your Yes. opinion and your insight, your specific advice to our listeners, something specific. समथिंग स्पेसिफिक ये है कि हम कहना मानना सीखें. अभी डॉक्टर सेठ ने मास्क की बात करी, मैंने फौरन मास्क लगाया, मैंने दोनों मास्क लगाए, मैंने सर्जिकल मास्क लगाया जिससे मैं अपना इन्फेक्शन बाहर जाने से रोक रहा हूँ, और मैंने N95 मास्क लगाया जिससे बाहर का इन्फेक्शन मेरे अंदर नहीं आ रहा है. मैं, आप विश्वास कीजिए कि मैं सिर्फ जब नहाता हूँ और बेडरूम में होता हूँ तब अपना मास्क उतारता हूँ, और ये कथन एक बहुत बड़े अमेरिका के साइंटिस्ट का है, इसलिए इसको सबसे पहले मानना है. हमारे प्रधानमंत्री जी ने फेस कवर बताया है, ढांटा भी बताया, गांव के लोगों के लिए ढांटा बांधो, फेस कवर बांधो, गमछा बांधो, जो अफोर्ड कर सके N95 मास्क वो लगाओ, नहीं तो डबल मास्क लगाओ, मास्क लगा के बचो. ये मेरा मैसेज है सबके लिए. और आपे से बाहर नहीं होना है. जो हम कर रहे हैं, मेरी भाषा थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन सच्चाई है इसमें, हम आपे से बाहर हो गए हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में आउट ऑफ कंट्रोल. तो उसको आउट ऑफ कंट्रोल में से आउट ऑफ हटाना है, कंट्रोल पे आना है, नहीं तो आगे बड़ी अच्छे इसकी वार्निंग्स हैं. हमको अच्छे परिणाम बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे. WHO ने कह दिया है, दैट इज ऑन रिकॉर्ड, कि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो इस वायरस से कोई नहीं बचा सकता. सबसे बड़ी एहतियात है इसमें दूरी, सैनिटाइजेशन के साथ अपनी नाक को, मुंह को प्रॉपर्ली कवर रखना, और मास्क को ऐसे लगाना कि आपका चश्मा फॉग ना हो. अगर मेरा चश्मा फॉग हो रहा है इसका मतलब ये है कि बाहर की हवा अंदर जा रही है. दूसरा, हमको प्यार से रहना है, ग्रेटिट्यूड, प्लेजर और लव का कॉम्बिनेशन बनाना है, जिसके लिए जरूरी कंपोनेंट हैं फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, मनी, एनवायरनमेंट, क्रिएटिविटी, ऑफ कोर्स सेक्सुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, और अबव ऑल, then we have to live with a purpose still and make love in the society.
We should love the society. We should not hate the society. मेरे घर के लोगों में कुछ लोगों की डेथ हुई, मैंने देखा कि उनके घर लोग नहीं गए, अच्छा किया नहीं गए, लेकिन ये कह के न जाना कि हम नहीं जाएंगे, उसको कोविड हो गया था और हमको कोविड हो जाएगा, ये गलत है। आप एहतियात करेंगे और जाएंगे, अगर जाना है तो, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये स्पिरिट होनी चाहिए। हेट की स्पिरिट नहीं होनी चाहिए, रिजेक्शन की स्पिरिट नहीं होनी चाहिए, तिरस्कार की स्पिरिट नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड न्यू ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, आपके महान दर्शक जो इस बात को मेरी सुन रहे हैं, वो बड़े लोग हैं और वो वर्ल्ड के न्यू ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और उस वर्ल्ड के न्यू ऑर्डर का झंडा मास्क है, उसका झंडा मास्क है, और उसमें एकेव मानुष जाति का संदेश है, उसमें वासुदैव कुटुंबकम का संदेश है, उसमें मेरी भारत की संस्कृति का संदेश है। मैं आप सबसे, पूरी दुनिया से ये कहना चाहता हूँ कि इस कोविड वायरस के जरिए हमें एकता, शांति और प्यार का समन्वय होना चाहिए, न कि नफरत और दूरी का होना चाहिए। दूरी वहां बनानी है जहां हम एक दूसरे से दूर रह के मिल रहे हैं, लेकिन मनों की दूरी नहीं बनानी है, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। वो एक्चुअली फिजिकल डिस्टेंसिंग है। हमारी इमोशनल डिस्टेंसिंग को हमें बहुत अच्छा रखना है, प्यार से रखना है। और जिसका परिचय आप इस समय दे रहे हैं कि मैं तो यहाँ सीखने आया था अपने दो गुरुओं से, मैं बहुत कुछ सीख के यहाँ से उठूंगा आज। और हमको सबसे पहली जो सीख है वो ये है कि जो हमारे डॉक्टर, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स और जो हमारे चिकित्सक और जो हमारे बड़े कह रहे हैं, उनका कहना माने और मास्क बिल्कुल न उतारे, जैसा बार बार कहा जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री जी एक बहुत बड़े एक समाज के, जैसा आपका एसोचैम है, उसके अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे, और आखिर में वो बड़े दर्द के साथ ये बात कह के गए कि मैंने पूरे इस वेबिनार में एक चीज नोटिस की कि जो जो लोग यहाँ बैठे हैं कोई मास्क नहीं लगाए हुए हैं। उनके दर्द को मैंने समझा और महसूस किया, और मैंने फौरन जो उसके कंडक्ट करा रहे थे, उसके संचालक थे, मैंने उनको फोन किया कि आप डॉक्टर हर्षवर्धन को इस बात का भरोसा दिलाइए कि हम सब आपके साथ हैं। इस भारत को बचाना है, कोरोना से बचाना है, और हमारी जीडीपी जो गिर रही है उसको उठाना है। हमें मेहनत करनी है, हमें स्वावलंबी बनना है। उसके लिए हमको सबसे पहले कोरोना से बचना है और दूसरों को बचाना है। जैसा भी श्वेत साहब ने बताया, अपने बुजुर्गों को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, और सीखना है और समझना है। यही मेरा संदेश है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अशोक सेठ, एक छोटा सा सवाल आपसे है। First of all, I have seen a study that there have been almost 38% decrease in hospitalization for MI in India, in one state. So considering this, that ऐसा हो गया है क्या कि MI कम हो गए हैं कि लोग हॉस्पिटल में कम जा रहे हैं? दूसरी जो आप अपने अभी बात की, you touched upon the second wave, that now we are entering the second wave, so things are going to get worse. What is your opinion, sir? So दोनों चीजों को मैं आंसर देता हूं, and I know the time is running out, so I'll try to be brief. Firstly, Yes, heart attacks का जो कम दिखे, the decrease in heart attacks during lockdown was Yes, seen across the world. And certainly, I would say not even 38%. We had a decrease in heart attacks by nearly 60% in our hospital, across the centers in the country, reviewed, and certainly in the West. In the West, what was also seen was Italy and United States, where people ring for ambulances every time they have a problem, and every admission is through an ambulance, is the fact that while the heart attacks to the hospital were low, deaths actually at home had increased by twice the number, because the ambulance is rung up and when they land there, the person is already dead. So there was an assumption that actually patients have delayed their confidence that they were having heart attacks at home. The fact, because it was a lockdown, because they were scared of going to the hospital, because they were worried that they would contract COVID, they delayed their symptoms, and only when they really had a cardiac arrest did the ambulance get called. So all that is easy to document in the West, and this was very clear. However, in India, statistics are not clear. Yes, we had a 60% decrease. And I personally believe also that heart attacks did decrease in India.
because even when we survey our district hospitals, even when we survey our peripheral hospitals or the hospitals next to the patient, we've not seen an increase in heart attack cases. Now, we can't say whether they died at home, but we didn't see an increase in heart attack cases coming to the first contact hospital rather than the secondary or tertiary hospitals. And I do believe that part of it was decreased. Part of it was certainly inability to get to the hospital. In India, there are no ambulance services. Lockdown means lockdown. There are no efficient ambulance services. Patients were worried. Patients were scared. There had been an emphasis from every level to say कि घर में रहिए, बाहर ना निकलिए. But yes, अगर आप देखते हो कि जितने भी factors heart attack promote करते हैं, like stress, pollution, chasing time all the time, not looking at yourself, peace, anger, actually all had eating out, bad food. We'd actually moved to some form of a healthy living, looking within the family, spending more time with the family, less of stress, less of chasing time, less of pressures, less of anger. हमारे लिए तो उस time पे, for most families, it had become जैसे कि हम पहाड़ों में we had gone for a, जिसको कहते हैं कि एक meditation के लिए निकल पड़े थे. So actually, yes, all those are precipitants of heart attack. They cause heart attacks, and we had a decrease in heart attacks. Unfortunately, systems in India do not allow that documentation very easily in the community. But as doctor, I'm convinced about it. The second aspect आपने कहा था कि so this was, and now we are seeing the heart attacks. Yeah, so now we are seeing those heart attacks, but we're not seeing anybody who actually ignored himself, had a massive heart attack, and comes after 3 months. No, that point is rare and not common. The second, we are seeing the second, Hindustan ke liye sochiye, we are talking about a second wave in Delhi. But in India, we're not talking about the second wave. We're just seeing the first wave going deeper and deeper down to the tier 2 and tier 3 cities, and the numbers continuing to go up, and we are still on an upslope. ये बहुत worrying बात है, and I can actually emphasize this again and again. इसलिए worrying बात है because people have to understand that when we unlock, and we had to unlock because of numerous lives were being lost because of lack of economy, because lack of their employment, because of lack of their sustainability, because the lack of food, because other infections, other infections were creeping in. Therefore, we had to unlock this country. But when we unlock the country, which is already still on an upslope, we have a big task ahead in our hands. Most of the countries in the West unlocked when they're on the downslope. We are not seeing the second wave of the country. We're still seeing the first wave of the country, which is going to go up. And we don't know whether we're on the first camp or the second camp because the peak is still to come. As far as Delhi is concerned, yes, we're on the second wave for multiple reasons, and I can tell you that. But the biggest point is lack of discipline in this country. There are two aspects जो हमें समझना चाहिए, and that's why everybody's got to be cautious. एक तो, however much we may emphasize here about physical distancing, we have to realize that more than 50% or 60% of the population lives in socio-economic circumstances जहाँ पे physical distancing possible ही नहीं. एक कमरे में 5-5 लोग रहते हैं. They unfortunately live in congested surroundings जहाँ पे separation नहीं हो पाता है. We know the socio-economic status जहाँ पे एक सब्जी वाले को सब्जी बेचनी है, he's got to go and get it from the mandi. जब बेचता है तो how is he going to stand at 6 feet and actually give सब्जी? He has to buy sabzi and is to get it. जब हम workers को देखते हैं खा रहे होते हैं at a खोमचा, how are they going to maintain social distancing and wear masks? उनको तो रोज का खाना ही मिल जाए वो बहुत है. So those sort of things. But एक है कि जो मास्क पहन सकते हैं वो तो ठीक से पहने. Social distancing, physical distancing जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे. That's what worries me. जो मास्क पहन सकते हैं, जिनको पहनना चाहिए वो भी नहीं पहन रहे. That's what worries me. और हाथ धोना तो खैर हर एक के पास है ही. साबुन हर एक के पास है, सबसे सस्ती चीज है. पानी सबको अवेलेबल है. अगर आपने हाथ नहीं धोए तो आपने फिर इसको तो इन्फेक्ट कर ही दिया. तो ये सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, फिजिकल डिस्टेंसिंग कई जगह पे हम नहीं कर सकते, बट जो कर सकते हैं वो तो करें, वो तो एग्जाम्पल सेट करें, वो तो इस देश को बचाएं. बिकॉज आगे आ रहा है
वो एक पीक आ रही है, आएगी और बढ़ती जाएगी। वी जस्ट होप कि हमारे पास इतने सिस्टम्स अवेलेबल हैं, वी बिलीव कि इतने बेड्स हैं, बट ओनली टाइम विल टेल अस। द पीक इज नॉट हियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकंड पीक, स्टिल इन द फर्स्ट। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, Dr. K.K. Agarwal, we are running short of time, but I would like your short comment on some very important things which I had heard you speaking earlier at some different forums. There are three things which I would like you comment to hear your comments. One is on children with heart disease, how they are faring in COVID. The other is you had mentioned in other places some very important things like the importance of gargle and steam, because these are also something which everyone can do. Would you please reiterate? डॉक्टर के अग्रवाल सर। अब तक बच्चों का सवाल है, बच्चों को अभी तक कंफर्म नहीं है कि बीमारी होती है, अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है। ये जरूर है कि बच्चों को वायरल लोड ज्यादा हो सकता है, बट आर किड्स इन्फेक्शियस, वी डोंट नो। बच्चा घर में पहला बच्चे को बीमारी नहीं होगी, बड़ों से होगा, बच्चों से बड़ों को नहीं होगा। बच्चों की इलनेस छोटी होती है, सिर्फ कोमॉर्बिड वाले बच्चों में खतरनाक होता है। अगर आपकी उम्र 5 साल से कम है, मास्क की जरूरत नहीं है। 5 और 12 साल के बीच में शेयर डिसीजन बिटवीन यू, योर फैमिली एंड डॉक्टर। 12 साल के ऊपर के बच्चे नहीं है, वो बड़े हो गए। कोविड ने कंफर्म कर दिया है कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को अब आप बच्चा नहीं बोलोगे। तो उनके लिए एक अभी तक होता था ना, माँ बाप बोलते थे कि तुम तो बच्चे हो, अब कोविड ने बोल दिया है नहीं, 12 साल से ऊपर वो एडल्ट है, मोर्टेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां तक सवाल है कंजेनिटल हार्ट डिसीज का, यस, कोई भी हार्ट डिसीज अगर आपके अंदर में है, अगर आप 3 चीजें सहन नहीं कर सकते, याद रखिए ये वायरस 3 चीजें बताता है कि अगर आपको हाइपोक्सिया हो जाए और आपकी कंडीशन खराब हो जाएगी, या आपको इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, आपकी कंडीशन खराब हो जाएगी, या आपको क्लॉट बन जाए, आपको कंडीशन खराब हो जाएगी। वो 3 खतरे हैं। हर वो कंडीशन जो हाइपोक्सिया सहन नहीं कर पा सकती, इसलिए वो सारे बच्चे हार्ट डिसीज के जिनको कोई भी हाइपोक्सिया सहन नहीं करेगा, ये कोविड भी नहीं करेगा। जिसको हाइपर कोएगुलेबल स्टेट सहन नहीं करेगी, वो ये बर भी नहीं करेगा। और जिसको कोई भी इन्फ्लेमेशन सहन नहीं होगा, वो ये भी नहीं करेगा। फॉर्चुनेटली इसमें लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होता है, हाई ग्रेड फीवर नहीं होता। जहां तक सवाल है गार्गल्स का, और जहां तक सवाल है काढ़ा पीने का, जहां तक सवाल है स्टीम लेने का, आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा कि आपको स्टीम 24 घंटे लेनी है। अगर आयुर्वेद में क्लियर कट बोला है कि गर्दन से ऊपर तो स्टीम लेनी ही नहीं, क्योंकि अगर आप जितने भी आयुर्वेद के स्टीम देखेंगे, उसमें ऊपर का हिस्सा वो बॉक्स से बाहर निकला होता है। दे नेवर सेड कि आप अपने हेड को बार बार गर्म करो। स्टीम दिन में 1 बार या 2 बार, हर आधा घंटे के बाद में नहीं। आयुर्वेद में हर जगह लिखा है ल्यूकवार्म ल्यूकवार्म ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म काढ़ा आप पी सकते हैं, बट आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं, हर आधा घंटे में गर्म पानी, उबलते हुए पानी को पी रहे हैं और हर आधा घंटे में स्टीम ले रहे हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर में अब क्या हो गया, 2 महीने के बाद में वो सारे ENT के पास जा रहे हैं कि अंदर छाले पड़ गए। यस, काढ़ा इज गुड। ल्यूकवार्म काढ़ा मतलब जो मैंने कहा था कि बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट, जो भी एस्ट्रिंजेंट चीजें हैं उसका काढ़ा, या रेड टी या ग्रीन टी का काढ़ा बना के पीते हो, लेकिन उबलता हुआ पियोगे तो वो गलत है। रिमेंबर, ये वायरस मेरे शरीर में एक बार घुस गया तो सेकंड्स के अंदर में वो मल्टीप्लाई कर देता है। 24 घंटे तो आप रेस्टू डाल के काढ़ा नहीं पी सकते। सो काढ़ा जो आज की डेट में लोगों ने गलत समझ लिया है कि हर आधा घंटे में गर्म पानी पियो या हर आधा घंटे में स्टीम लियो, दैट्स नॉट करेक्ट। स्टीम इज वेरी गुड इफ यू डेवलप द इन्फेक्शन, but it is not going to prevent you because you are not going to take 24-hour steam. Kada is good once you develop the infection. So therefore, yes, kada pijiye, immunity built up kariye, but not boiling in every half an hour. Namaskar. Thank you so much, sir. बहुत बहुत डॉक्टर मोहसिन वाली सर, आपसे पूछना चाहेंगे, you had touched on the vaccine issue. क्या हम इस इंतजार में, इस होप में रह सकते हैं कि वैक्सीन आएगी और इस बीमारी को इस दुनिया से बाहर उठा के फेंक देगी? So should we be realistic about it? नहीं, वैक्सीन पे तो बहुत काम हो रहा है। देखिए इसमें क्या हुआ है, कोरोना में बहुत सी चीजें peculiar. I will be very short in my answer. We have to understand this epidemic or pandemic. इसमें क्या हुआ है, पॉलिटिक्स, मनी एंड मेडिसिन, इनका ऐसा घातक मिक्सचर तैयार हुआ है जिसमें बहुत सी नई चीजें निकल के सामने आई।
मुझको ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वैक्सीन में भी रेस हो रही है, कौन आगे निकले। रेस नहीं करनी है हमको, बहुत सेम मेथड से, बहुत ही समझदारी के साथ कई जगह वैक्सीन डेवलप हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, और वैक्सीन है इसीलिए वैक्सीन टेस्ट हो रहा है। तो इस बात से तो कोई डरने की जरूरत नहीं। वैक्सीन कब आएगा? वैक्सीन है, वो कब घोषित होगा तो ये सुरक्षित है और इम्यूनिटी देता है, इसका इंतजार है। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। वैक्सीन है, वैक्सीन का कमर्शियल प्रोडक्शन पॉसिबल है, और वैक्सीन का हमारा अनुबंध भी है बहुत से कंट्रीज से, इवन रशिया से भी है। लेकिन हमारी, मैं एक बात आपके उससे बता दूं इस फोरम से बहुत अच्छी, सबसे पहले तो एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि 30 लाख लोगों की रिकवरी अभी हो गई है पूरी काउंट इंडिया में, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो वैक्सीन के बारे में जो वो है बताना है वो ये है कि वैक्सीन, हम 70% दुनिया का वैक्सीन एक्सपोर्ट करता है इंडिया, इसी तरह HIV की ड्रग्स। तो वैक्सीन, हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसको ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वैक्सीन की रिक्वायरमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास 5 बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिसमें वैक्सीन बनता है। वैक्सीन के बारे में फिक्र नहीं करनी है, लेकिन वैक्सीन का कैसे, किस स्ट्रेटेजी से, किन लोगों को पहले, किनको बाद में, कहाँ अवेलेबल होगा, कैसे लगेगा, ये समय बताएगा। तो वैक्सीन के बारे में इतना ही है कि वैक्सीन आएगा। हर्षवर्धन साहब का इस स्टेटमेंट में कोट कर रहा हूँ, इस साल के आखिर तक आएगा। लेटेस्ट बहुत ज्यादा लेट हुआ तो और पहले आ जाएगा 2011 अगले साल 21 की जनवरी में। और सो इसमें कोई ज्योतिष, कोई पेशन गोई नहीं करनी है। बट वैक्सीन से पहले, नहीं सुन लो, वैक्सीन से पहले जो ये वैक्सीन 3 बता रहे हैं ना हम तीनों आदमी, मास्क, ये सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 बड़े वैक्सीन हमारे पास हैं, इनका इस्तेमाल करिए और कोरोना से बचिए। HIV के मरीजों की बात नहीं की हमने। HIV के मरीज और डायलिसिस के मरीज, ये 2 कैटेगरी और हैं जिनको इस बीमारी का खतरा है। उनको भी बहुत सावधानी से आइसोलेट करके रखना है, बचा के रखना है, और बाकी भगवान पे छोड़ देना है। और अच्छा खाइए, सादा जीवन, कुछ विचार तख्ती पे लिखा करते थे हम लोग बचपन में 4th क्लास तक, वही सब जो है काम आज आ रहा है। हाइजीन काम आ रही है। हमारे सीनियर बड़े बड़े डॉक्टर हर मरीज देखने के बाद चिलमची में पानी से अपने हाथ धोते थे, आज वही ये बोतल कर रही है। तो ये पुराने उसूल को याद करना है, हमें मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग करनी है और हाइजीन रखनी है। क्या बुरा है? वो तो हमें अब उसके वैक्सीन के बाद भी करना है। तो इसलिए वैक्सीन की प्रतीक्षा करने, और उसके लिए तब तक ये 3 वैक्सीन है, इनको ले इस्तेमाल में। संजीव जी, राजेश केसरी जी, आपके संरक्षक, आप सबको मेरी बधाई, शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज आपने मौका दिया कुछ सीखने का इस फोरम से। मैं डॉक्टर सेठ और डॉक्टर अग्रवाल साहब का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि उनके जरिए मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैं बहुत कृतज्ञ हूं एसोचैम का कि आप, ये जो टॉपिक है आपका इलनेस टू वेलनेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी चिकित्सक पद्धति में। आज हम अगर वेलनेस पे आ जाएं तो इलनेस होगी ही नहीं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, इफ वी रिप्लेस आई ऑफ द इलनेस विद वी द वेलनेस, तो वेलनेस ही वेलनेस हो जाएगी, इलनेस खत्म हो जाएगी। और यही हम लोगों का मिशन है कि लोग सिगरेट छोड़ें, शराब छोड़ें, अच्छा खाना खाएं, अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक रखें, वेट मेंटेन करें, ड्रग्स से दूर रहें। देखिए आजकल पूरा टीवी ड्रग्स से भरा हुआ है, तो ये ड्रग्स का प्रकोप झेल रहे हैं हम लोग, 24 घंटे ड्रग्स देखनी पड़ रही है। तो इन सब कुरीतियों से और कुप्रथाओं से और ये जो बुरे शौक हैं, इनसे बचे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेरे भारत का स्वास्थ्य सबसे अच्छा होना चाहिए। ये ऋषियों मुनियों वाला देश है, यहाँ से योगा गया है पूरे विश्व को। हम सबको अच्छा संदेश देना है। We are the greatest nation of the world. That is true. That is true. That is very true. Thank you so much, sir. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. In conclusion, I would just like to reiterate few very important points. First is precautions are required and no complacency, as Dr. Ashok Seth has said. Mask has to be there.
The barrier has to be there. We have to protect others. We have to protect ourselves. We have to protect our family. And it is not a matter of social distancing. It is a matter of actually physical distancing. We have to be socially close, but maybe we have to keep the physical distance, and we have to understand very rightly, as Dr. Ashok sir has said, that it is not only a matter of 6 feet. If we go out, it can be 20 feet, it can be 25 feet also. So mask is very important. We have to protect ourselves. Our food is very important, as all the panelists have mentioned, and very correctly, very simply said by Dr. Ashok said again that it has to be home food. घर का खाना सबसे अच्छा, सबसे बेहतर खाना. और आपने डॉक्टर के अग्रवाल ने बोला, डॉक्टर मोहसिन वाली ने बोला कि धूप में बैठ के खाएं. धूप में यू गेट विटामिन डी. आप घर के बाहर हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है. इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. फिजिकली एक्टिव रहें, फिजिकल एक्सरसाइज करें. पार्क खुल गए, आप बाहर जा सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस रख के कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, जो भी आप करना चाहें. बैलेंस फूड इज इम्पोर्टेंट. डॉक्टर के अग्रवाल मेंशन वेरी सिंपली, व्रत का खाना बहुत फायदेमंद हो सकता है. सिंपल खाना जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम हो. काढ़ा पी सकते हैं, ल्यूकवार्म काढ़ा पी सकते हैं, ये भी फायदेमंद है. समय समय पर काढ़ा पी सकते हैं. अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखें, हम सोशल स्टिग्मा ना बनाएं इस बीमारी को, क्योंकि हमें इस बीमारी के साथ रहना सीखना है. ये बीमारी जल्दी जाने वाली नहीं है, और वैक्सीन हो सकता है इस बीमारी का उपाय ना हो. किसी भी इफेक्टिव वैक्सीन को आने में कई साल लग सकते हैं, कम से कम 2-3 साल लग सकते हैं. तो ये सब बातें जान के हमें एक साथ रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है. एंड वी आर वेरी लकी दैट वी हैव such important and such honorable people among us today. Dr. Ashok Seth sir, thank you very much. Dr. K. Agrawal sir, thank you very much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला है. मोहसिन वाली, आपने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई, लंग्स के बारे में, सेहत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Once again, I'd like to thank all the panelists. Above all, I'd like to thank ASSOCHAM, Shri Rajput ji, Shri Satish Jain ji, कि आप लोगों ने ये मौका दिया लोगों तक ये संदेश ले जाने का कि दिल की बीमारियां कैसे होती हैं, कोविड में कैसे उनका बचाव किया जाए. और अगर कोविड हो जाए, उसमें दिल की हार्ट को कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बाद रिहैबिलिटेशन करना जरूरी है, जैसे डॉक्टर अशोक सेठ ने बताया. It is a long process. It is not only a matter of just recovery from COVID. Once again, thanks to all of you, and above all, thanks a lot to the audience who stayed with us. Thanks a lot. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद.